माननीय विलास जी, सर्व रेस्पेक्टेबल डिग्निटरीज, आदरणीय उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं पूर्व विदर्भ महिला परिषद और विबजियर ग्रुप ऑफ स्कूल्स इनको इस नए स्कूल के उद्घाटन के निमित्त हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि नागपुर ये एजुकेशनल हब बने, ये हम सब की इच्छा है और इसी के कारण हमारे क्षेत्र में काफ़ी अच्छी अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आई है। जो हमारे पारडी में डंप यार्ड था, वहाँ 110 एकड़ में सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी आई है, अब जहाँ 15,000 बच्चे पढ़ते हैं। और उसी के बाजू में 8 दिन पूर्व अभी नरसिंह मुंगजी केजी टू पीजी उनको हमने 49 एकड़ जगह दी, उनका भी काम शुरू हुआ है। नागपुर में इंटरनेशनल लॉ स्कूल भी है जो भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड की है, और ट्रिपल आईआईटी आईएम तो नागपुर का भारत के 5 रैंकिंग में आता है जो मिहान में है। तो एजुकेशन में हमारे यहाँ अच्छी प्रकार की फैसिलिटी तैयार हो, ये नागपुर के लोगों की भी इच्छा थी और हम सब की इच्छा थी। इसमें आज एक नया एडिशन हुआ है, इसलिए विबजियर ग्रुप को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आने के समय मैंने पढ़ा कि नॉलेज इज ए पावर and conversion of knowledge into wealth is the future. I always talking about 2 important philosophies. One is knowledge to wealth and other is wealth to wealth. The most important thing related with any society is ethics, economy, ecology and environment. And regarding economy, it is the important thing that we need to develop knowledge as a power. Because the innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices is very important. Either it is aviation industry, transport industry, anywhere, every time we need to upgrade the technology. And the skilled manpower is very important for the development of our country. The futuristic vision and futuristic development is really very, very important with the development and progress of our country. And the education is a key factor. Now in international level, the people are discussing about the Happy Human Index, that is domestic Happy Human Index, the health and education. There are a lot of things about Happy Human Index, but 2 important things is health and education. Unfortunately, this is the appropriate time for all of us to giving highest priority for developing good education in the country. Because the quality of education what we have, on the basis of that, we are going to plan the future development of our country. The problem is that the qualitative education is very important. And I am really happy that people are now starting a lot of good schools, and now even the poor people also, they feel that they should have a good school for their children, and that is the reason that quality education is very popular. But as far as the investment is concerned, it is very high. By having heavy investment and giving affordable service is a big problem. We need to find out the way out that with the quality education, how we can give affordable to the people, that is equally important. Only one thing which I will request you, I remember when I was in UK, I got opportunity to deliver the lecture in British Parliament. And after my lecture, when I meet with the Prime Minister, he asked me what is the biggest problem in India. I just tell him that the
poverty, unemployment, because of heavy population, that is to be a big problem. Then I asked him the question that what is your problem? In your European country, what problem you are facing? He was telling me that our problem is our young children, youth and particularly the girls now, they are in living relationship, and that the reason they destroy total social system in our country. My only request to the management that 100% is important that we need to give good education with the science and technology. But at the same time, the value-based education and sanskar are equally important. Without value-based education and sanskar, we cannot make a person appropriate. Because no one is perfect and no one can claim that he is perfect. Uttam, Adhik Uttam, Sarvottam up to infinity. The type of the people where we need those who can make the historical development of our country, we need to develop them in a way that they have full knowledge. At the same time, they should be good human being. And for good human being, the values are very important. The value-based education system and value-based family system is the basic strength for Indian society. So my request to you, give the good education of international standard. It is very important. But at the same time, value-based education is equally important. Without that, only the physical development is not going to helpful for the society, for the country, even for the family. We have got all type of wealth in the family, but there is no peace. So exactly we have to think on the line that how we can make this future generation as a good human being. And that is only possible with the sanskar and values. So my request is also think about it. Probably you may have your board of studies or your agenda, all these things may be there, but it is to be equally important. मैं always telling to the people, मेरा बैकग्राउंड कोई एजुकेशन का इतना अच्छा नहीं है. मैं 75 में इमरजेंसी थी, मिसेस शुक्ला बैठी है, इनके हस्बैंड हमें पढ़ाते थे. तो मैं 75 में इमरजेंसी के खिलाफ एक्टिव हो गया और पूरा समय उसी में काम करता था. जयप्रकाश जी के आंदोलन में यंग था, मेरी उम्र 19 साल की थी. और मुझे HSC में पहले मैं फर्स्ट क्लास में पास होता था, पर इमरजेंसी के कारण मुझे 52% ही मार्क मिले. तो मेरे घर पे मेरी बहन, माता जी सब नाराज हो गई. तो दुर्भाग्य मेरा ये था कि मुझे 49.26% मार्क मिले साइंस ग्रुप में. सो आई वॉज डिस्क्वालिफाइड फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन. अब मुझे 9 डॉक्टरेट्स मिली, डीलिट्स मिली है. और मैं अभी भी डॉक्टर नहीं लगा था. Because I feel कि the person who is disqualified for engineering admission, how he can become a doctor? तो अभी 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए. तो बहुत लोगों का कंसेप्ट ऐसा है कि मैं इंजीनियर हूँ. मैं इंजीनियर भी तो हो ही नहीं. तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही जीवन में सक्सेस होते हैं, ऐसा नहीं है. और पढ़े लिखे लोग सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा भी है. Between the line you need to understand with the knowledge what are the important things which you must have. Without that we cannot achieve your goal, and that is to be very important. And everywhere there is a competition. मैं थोड़ा साइंस पढ़ा था, उसमें मैंने कहा था कि आर्किमिडीज इज एब्सोल्युटली करेक्ट. जितना तुम्हारा वजन होगा उतना पानी में डाला उतना ही पानी ऊपर आता. So I am very rigid in my politics also. I don't want to compromise my convictions and my values and my thinking and my ideology. If people like me, they will vote me. If they don't like it, it is their authority, their right to decide about it. So somewhere this is the time where you are making the future generation of our country with full of knowledge of international standard. At the same time try to make them internationally a good human being, belong to Indian culture, values and history.
that is to be very important. I remember the Purva Vidarbha Mahila Parishad, Anusaya Bai Kale Sabaguru. Anusaya Bai Kale, I don't know, because my mother was every time telling me, she was a very big leader, very reformist. And कोणतं वर्ष होतं त्यांचं? My date of birth is 57. But I don't remember. मेरी माता जी उनको बहुत एडमायर करती थी और उस समय वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके चुन कर आई थी, सेकंड लोकसभा में। तो उनका महिलाओं के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा काम था। उन्हीं के नाम से ये पूरी वास्तु थी। और वन थिंग इज वेरी गुड अबाउट काले फैमिली, कि जो उनको, चाहे वो चिटनीस सेंटर हो चाहे ये हो, आई एम रियली थैंकफुल। इवन आई नो विलास फ्रॉम 50 years एंड इज राज साहब को 60 years. फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई नो हिम. The one thing which I like about the family is they are very conviction oriented. And they never expect any type of direct, indirect advantage from their trust. उन्होंने ट्रस्ट को देने का काम किया, लेने का नहीं किया. जनरली ट्रस्ट जो बनते हैं वो लेने का काम करते हैं. टाटा, रतन टाटा जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और मैं उनके जीवन की एक बात अभी मैं उनके ऊपर एक लिख रहा हूं. तो बहुत अच्छी पसंद करता था कि उनकी पूरी प्रॉपर्टी टाटा सन्स में सब शेयर होल्डिंग आता था और टाटा सन्स का प्रॉफिट उन्होंने समाज को दिया था. यानी जो जो अर्निंग मिल रहा था वो कैंसर के पेशेंट के लिए, बाकी के लिए उन्होंने अनेक जगह पर खर्चा किया. और बहुत सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल सेंसिटिवनेस उसका उत्तम उदाहरण थे. मैं उनको एक बार औरंगाबाद में डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल बना था, उनके लिए बहुत आग्रह किया हमारे आरएसएस के बड़े लोगों ने कि टाटा ही उद्घाटन करें. तो मैं उनके पास गया था कि तुमको चलना पड़ेगा मेरे साथ. बोले लेकिन मैंने अपने फैक्ट्री का ही कभी इनॉग्रेशन नहीं किया है, तो मैं कैसे आपके साथ जाऊँ. वो इतने प्रिंसिपल थे कि एक बार मैं ताज होटल में दिल्ली के मानसिंह में उनके साथ खाना खाया. तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो खाना खाने के बाद उन्हें वेटर को बुलाया, बिल लाओ, और बिल दिया. जो ओनर थे, तो वे जो ट्रस्टीशिप की एक प्रिंसिपल है, कन्विक्शन है, फीलिंग्स है, वो काले परिवार में है. और इसलिए उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं. उन्होंने वक्त आया तो देने का काम करेंगे पर लेने का नहीं. अदरवाइज ट्रस्ट है ने नंबर 2 का पैसा वाइट करने का काम होता है. तो मैं विलास को और काले परिवार को और अनुसया भाई, ये जो पूर्व विदर्भ महिला परिषद को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा. और ये जगह का बहुत दिनों से बड़ी थी अच्छा उपयोग हुआ है. और इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो एजुकेशनल संस्था आएगी, उससे नागपुर में भविष्य में बहुत अच्छे नागरिक, नॉलेजेबल, गुड ह्यूमन बीइंग और अच्छे जिनको हम कह पाएंगे ऐसे लोग यहाँ से निर्माण होंगे. इसलिए मैं दिल से पूर्व विदर्भ महिला परिषद को और विपजीआर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूँ. धन्यवाद. Thank you, Shri Nitin Gadkari ji, for your inspiring words. We are deeply encouraged by your support for Vibgyor World Academy and its mission to provide quality education to the students of Nagpur city. To formally conclude the proceedings, we invite our CFO, Mr. Ravi Agarwal, to deliver the vote of thanks.